India and Pakistan's Super 4 match in the ongoing Asia Cup on Sunday lived up to its hype as both sides played out a thriller match. In the end, it was Babar Azam's side that prevailed by 5 wickets. The biggest talking point of the game, though, came in the 18th over of the innings. You had young seamer Arshdeep Singh. He dropped a relatively easy catch, according to experts, off Asif Ali, which gave Pakistan's team a second life. Had he taken that catch, Pakistan could, according to experts, have gone on a back foot again in the chase. India would have got a grip on the game. Twitter was not easy on the young player. They roasted him intensively. But speaking in post-match press conferences, you had a number of people come out in his support. First, you had Indian batter Virat Kohli. He showed his support for Arshdeep Singh. Anyone can commit a mistake. The situation was tight. You've then had, after that in the hours since, former Indian spinner Harbhajan Singh. He came out in Arshdeep's rescue, saying no one drops catches purposely. The young seamer should not be criticised. I want to take you to what Virat Kohli had to say. Then we'll connect with the reporter for more details. प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं. कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या जानी चाहिए. All right, you can call us in. This is another story that we'd love to hear your opinions on. We'd also love to know what you thought about the match last night. India stands with Arshdeep Singh, as you can see, 01204341895. Call us in, voice your support, but also tell us your thoughts on the match last night. On the matches India has next. Remember, India is set to play Sri Lanka tomorrow evening at about 7:30 p.m. We're also keeping an eye on that. For now, my colleague Rishi is with us. We're going to ask him a few more questions on all of these developments. Rishi, we've just described to our audiences exactly what took place yesterday, why it was considered a turning point in the game. But could you just tell our audiences a little bit more about the player that Arshdeep Singh is? Bring us more context about him, please. See, Toya, you have to understand, talking about the match first, you have to understand it's an India-Pakistan match. It's a high-pressure situation. And in such matches, there are times when people will fumble, mistakes will happen. Arshdeep Singh is a young cricketer. He has started playing cricket, like international cricket, just an year back, not even a year. So there are times in such high-pressure matches, people make mistakes, and these things will happen. It happens from the best of the players. It happens from people like, the captains also. When you play under high-pressure match, you crumble under pressure. So this is a very normal thing to happen, and with people trolling Arshdeep Singh about it, I think it's completely unfair. And even when you start looking at the result of the match, you can't hold Arshdeep Singh single-handedly responsible. Who would you actually hold responsible? Arshdeep Singh, who dropped the catch, or Bhuvneshwar Prasad? He leaked actually 17 runs in the penultimate over, after which actually match again, it went more in Pakistan's favor. Or someone might just tomorrow stand up and blame Virat Kohli, who played a brilliant inning, but someone might just say that Virat Kohli didn't take India to victory. So Virat Kohli is the one who should be blamed for this loss. So this list is endless and it doesn't make any sense. I think we all believe, in fact, that Arshdeep Singh gave his best. There are days mistakes will happen, and it's a part of the game. Okay. Rishi, just for our audiences, though, if you could bring us more details about the moment itself that's in focus, and then if you could tell us more about the player, as we were asking earlier, that Arshdeep Singh is. So the moment that we were talking about happened when Arshdeep dropped catch of Asif Ali. Asif Ali was playing really well. It was actually a sitter. Without a doubt, we have to give it to we have to accept that it was an easy catch to take. Having said that, as I spoke about the fact that, there is a lot of pressure and everything, that's why it must have happened. And see the kind of support that Arshdeep is getting here, right from the right from Virat Kohli to Irfan Pathan to Harsha Bhogle. I'm very sure that when the Indian team must have gone back to the dressing room, even Rohit Sharma, the captain, also must have told him, it's okay, these things do happen. Yes, he hasn't come on record, but these are all dressing room conversations. Rishi, if I could request you to stay with us, because we do have some callers coming in. We have Manjinder Singh Sirsa, the BJP leader. He's with us this morning. Sir, did you watch the match last night, sir? What was your reaction? So I did watch the match. Our boys play really well. Of course. हारना जीतना तो एक
पार्ट गेम का हिस्सा है, लेकिन आई एम ऑल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड पेन्ड बाय द ट्वीट्स डन बाय दिस ट्रोल्स ऑफ पाकिस्तान. It is not the troll of Pakistan. In fact, it's the Pakistan government who's doing this. ये नया नहीं है. They are doing since 70s और 80s. बार-बार सिखों को इस तरह से प्रोट्रे करने की कोशिश करना, उनके खिलाफ हेट फैलाना, उनके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करना. और अर्शदीप के साथ जिस तरह का खालिस्तानी वर्ड यूज किया गया, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं. हम भारत के देशप्रस्त लोग हैं. ना हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना देने की, ना लेने की. प्यार दिया. हारना जीतना गेम का एक हिस्सा है और उसने एक अच्छे ब्रिलियंट प्लेयर की तरह खेला है. और उस चलते क्योंकि पाकिस्तान को एशिया में तो पहली बार जीतने का मौका मिला और बड़े बार उनकी एक जीत थी, मुझे लगता है उनको उसको हजम उसके बजाय एक सिख को टारगेट किया. और ये पहली बार नहीं है. मैं जैसे पहले भी कह रहा था, ये 80 से लगातार ऐसा ही करते आ रहे हैं. जब भी इनको कोई मौका मिलता है तो सिखों के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर करते हैं और इससे उनका कोई लाभ ना होकर मुझे लगता है कि आज देश के लोगों को और दुनिया भर में बैठे हमारे सिखों को भी पता चला कि पाकिस्तान किस कदर वो नीचे आ सकता है. चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गेम हो या वॉर हो, दोनों में उसका यही स्तर रहता है. मुझे बहुत दुख अफसोस है. मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार भी उसके ऊपर जरूर अपनी प्रतिक्रिया देगी और जरूर इन ऐसी कार्रवाई करने को पाकिस्तान की सरकार को कहेगी. Manjinder Singh Sirsa, thank you for joining us. My colleague Rishi is still with us. Rishi, I believe, does have someone to bring us an interview with. Rishi, over to you. Joining me now is the coach of Arshdeep Singh. Let's speak to him about this whole controversy. Sir, ये जो ट्रोलिंग हो रही है अर्शदीप की, उन्होंने कैच छोड़ा उसके बाद आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. इनफैक्ट उन्होंने आखिरी ओवर में आसिफ अली का विकेट भी लिया. इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं ट्विटर पे. क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है. जब आप गेम खेलते हो, कैच पकड़े भी जाते हैं अच्छे और कैच छूट भी जाते हैं. ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज वाला मैच होता है इंडिया पे. तो प्रेशर रहता है, तो थोड़ा लाइटली लिया उसने या कुछ लिया, प्रेशर था तो कैच छूट गया. लेकिन कैच छूटने के बाद भी हमारे पास मौका था कि हमारे पास 2 ओवर में 27 रन थे जो हम डिफेंड कर सकते थे. तो जो सेकंड लास्ट ओवर जब कैच पकड़ना चाहिए था, मैं मानता हूँ कि अगर कैच नहीं पकड़ रहा, छूट गया, तो उसके बाद भी हमारे पास 27 रन थे. तो जो सेकंड लास्ट ओवर में हमें 19 रन जो भुवनेश्वर को पड़े, वो भी थोड़े कॉस्टली हो गए. अगर यही 10 या 12-13 रन अर्श के पास होते तो शायद वो डिफेंड भी कर जाता. तो भी उसने फिर भी कोशिश की है 7 रन को डिफेंड करने के लिए. वही पाकिस्तान को 5 बॉलें लगी है उसमें डिफेंड करने के लिए. तो अगर एक आधा 3 या 4 रन और होते उसके बाद तो शायद वो डिफेंड भी कर जाता. तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है. या तो होता है कि लास्ट विकेट थी जी, 2 रन चाहिए थे उनको, पाकिस्तान को 6 रन चाहिए थे, 4 रन चाहिए थे, लास्ट विकेट में कैच छूट जाता, तब मान लेते कि वो मैच उसकी वजह से हारे. लेकिन उसके बाद कैच छोड़ने के बाद भी पाकिस्तान इंडिया के पास चांस था मैच जीतने का. जो अगर नहीं डिफेंड हुए हमारे 27 रन, क्योंकि वो खेल ही अच्छा है. तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा चलता रहता है. तो ऐसा किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए. तो अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो कैच किसी से छूट सकता है. बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और सर, आप तो उनके साथ रहे, आप उनके कोच हैं, तो उनकी मेंटल फिटनेस के बारे में कुछ बताइए अर्शदीप सिंह जी, क्योंकि ये काफी ट्रोलिंग हुई है. हालांकि सबने उनको सपोर्ट किया, विराट कोहली से लेकर आई एम श्योर कैप्टन ने भी सपोर्ट किया होगा. तो क्या उनका जो मेंटल स्टेटस है क्या होगा इस टाइम? आपको क्या लगता है? इज ही अ स्ट्रांग बॉय? ही विल फाइट इट आउट? या ही इज अ वेरी स्ट्रांग बॉय. ऐसा कुछ नहीं है. उसने लास्ट पाकिस्तान की जो पिछला मैच खेल रहा है उसमें भी अच्छा बॉल किया है, 2 विकेट लिए हैं. तो उसने कल भी जो 7 रन थे उसको भी डिफेंड करने की कोशिश की. वो मेंटली टफ था. ठीक है, बाई चांस की वो एक थोड़ा रन उसका एक बाउंड्री लग गई 2 ओवर में. अगर वो बाउंड्री ना लगी तो शायद वो 7 रन भी डिफेंड कर सकता था. एक ही बॉल रह गया था डिफेंड करने के लिए. तो ही इज अ वेरी टफ विद माइंड, नो प्रॉब्लम. तो वो अभी भी बूस्ट अप है, अगले मैच में अच्छा बॉल करेगा. और ऐसा नहीं है, उसने कैच अच्छे पकड़े भी हैं. पिछले मैच में भी कैच अच्छा पकड़ा उसने. तो ये तो किसी से भी, अगर ये कैच किसी और से छूट जाता है या पुराना जो अच्छे फील्डर से छूट जाते हैं, तो कैच तो किसी भी फील्डर से छूट सकता है. इसलिए हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो फील्डर खराब है या वो मेंटली टफ नहीं था या वो ऐसा नहीं है. तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है. कोई जानबूझ के तो छोड़ता नहीं कैच.